एक्चुअली डांस को मैंने नहीं चुना, डांस ने मुझे चुना। जब मैं छोटी थी, आई गेस आई हैड जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, तो जैसे घर पे कीर्तन वगैरह होते थे तो ऑल द लेडीज वुड गेट टुगेदर एंड सिंग भजन, एंड जब कृष्णा राधा के भजन होते हैं, आई वुड गेट अप एंड स्टार्ट डांसिंग। डांस एक तरह से एक पूजा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू दिस डिफिकल्ट फील्ड, स्पेशली इन दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड। हम आपके कौन आई थी, माधुरी दीक्षित की, एंड मॉम हैड टेकन मी फॉर द फर्स्ट टाइम टू अ मूवी थिएटर, एंड मैं पूरा टाइम डांस कर रही हूँ माधुरी दीक्षित को देख के, एंड शी इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई हैव हैड इन माय लाइफ। सो आई एक्चुअली नेवर गॉट फॉर्मल ट्रेनिंग बिकॉज मेरी मम्मा कहते मुझे डांस पहले से ही आता था, सो वी जस्ट लेट यू बी। तो मैं घर आके आई रिमेंबर आई वुड डांस फॉर लाइक 8-9 hours, आई वुड जस्ट कीप डांसिंग। स्कूल में जो एनुअल फंक्शंस होते थे, ये होता था, वो होता था, and then we moved here and I lost touch with dance. As an immigrant child, you get bullied, you get so many other challenges and obstacles in the way. Yeah. So I lost that confidence. Show me something and I'll be like, no, मेरे से नहीं हो रहा. I was like 11, like I would start crying. Talent shows वगैरह आए, so you know my family encouraged me कि जाओ participate करो, and then started getting more confidence. My friends and everyone started encouraging, so वहीं से journey. तो आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी ने बोला नहीं, जैसे मोस्टली होता है कि हमारे फैमिलीज में दे मोस्टली टेक मेडिसिन, इंजीनियरिंग टू बी द मेन स्ट्रीम करियर्स? वो बहुत पुश बैक था कि एकेडमिक करियर पिक करो या कुछ ऐसा पिक करो जिसमें you know there's because they sacrifice so much of their lives to come here. Right. So there was a lot of pushback. If we're talking about women of worth and you know Right. worth of women, I would like to give it to my mom, like the credit to my mom, because she was like, nahin, like this is what she loves to do, we cannot take that away from her. कई और ऐसे शोज हमारे फाउंडेशन के आए जिसमें स्टेज पे परफॉर्म किया, फिर बाद में और टीम्स भी बनी और इसके साथ जो लड़कियां थी वो जुड़ी और उन्होंने परफॉर्म किया। लाइक शी वाज अ काइंड ऑफ हाउसहोल्ड नोन नेम फॉर every function happening in Calgary. She will represent our culture, our dance in the most perfect way. इनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चर एंटरटेनमेंट, साउथ एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड मिला है, फिर इशिता को क्वीन एलिजाबेथ प्लेटिनम जुबली मेडल मिला है। ऐसे बहुत सारे मेडल्स हैं जो इनको मिले हैं और अचीवमेंट्स के लिए इनको प्रेज किया गया है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है हमारे अपने वाओ टीवी में। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हमारा सेकंड एपिसोड। वाओ टीवी मींस वर्ल्ड ऑफ वुमेन। सो उसमें मैं क्यों हूँ ये मैंने शायद आपको पिछले भी एपिसोड में समझाया था, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वुमेन है और हम लोग विमेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन हम सबका फर्ज बनता है कि हम हमारी जो विमेन हैं, हमारी माएँ, बहनें, दोस्त, उनको हम आगे बढ़ाएं और उनका साथ दें और कंधे से कंधा मिलाकर हम जितना उनको आगे बढ़ा सकें वो बढ़ाएं। तो इसलिए मैं अमृत बराड़ और मेरे साथ हैं सिमी संधावालिया, जो कि ये एपिसोड्स आपके लिए लेके आते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इनको जरूर एंजॉय करेंगे। आपके सबके प्यार के लिए और एनकरेजमेंट के लिए हमारे लास्ट एपिसोड को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगी सिमी जी? डेफिनेटली मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आपने जिस तरह से हमें प्यार दिया है, प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मैं शुरुआत करना चाहूंगी वाओ टीवी के आज के एपिसोड की by wishing you all a very happy Navratri, because Ma Durga embodies the power, energy, and the beauty that the women signify in this world. So I think it's a very amazing occasion, and we have a very amazing guest with us today. And I don't think so she needs any introduction. So Amrit ji, I will give it over to you to just say a few words. तो जैसे सिमी जी ने कहा, बहुत ऑस्पिशियस डे है आज और नवरात्रि की शुरुआत है, तो 9 दिन मस्ती होने वाली है। अलग अलग हमारे कल्चर्स में इसको तरह से मनाया जाता है, लेकिन सबसे बेस्ट वे है डांस का। हर एक कल्चर में नवरात्रि को डिफरेंट वे से मनाकर माता को खुश किया जाता है और डिफरेंट डांसेस जो है वो पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो सबसे बड़ा नाम इस समय हमारे कैलगरी में है मधुबन आर्ट्स का, जिसके डायरेक्टर हैं इशिता सिंगला जी, जो हमारे साथ आज जुड़ी हैं। और आइए उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। तो आज वो किस मुकाम पे हैं? काफी सालों से मैं इनको जानता हूँ और काफी बार इनके साथ मेरी बातचीत हुई है, लेकिन आज हम एक डिफरेंट वे से इनको प्रेजेंट करने वाले हैं। इशिता, वेलकम टू द शो। Thank you so much. Thank you so much, Amrit. A very warm welcome, Ishita. It's a pleasure and honor to have you. And the pleasure is all mine. So इशिता,
कहाँ से शुरुआत करें? हमारी जो एक्वेंटेंस है काफी टाइम से है, और हम लोग काफी टाइम से आपको देखते हुए आ रहे हैं, काफी स्ट्रगल्स किए हैं अपने लाइफ में, और आज आप जिस मुकाम पे पहुंचे हैं वो एक एक काफी प्रेजेबल, एंड पीपल लुक फॉरवर्ड टू सी द परफॉर्मेंसेज एंड द वर्क यू डू. सो टू स्टार्ट विद, सबसे पहले तो ये बताओ, डांस ही क्यों चुना अपने लाइफ के अंदर? क्योंकि डांस एक बहुत डिफिकल्ट फील्ड है, राइट? इट्स नॉट, डांस सभी कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, सिमी जी भी कर लेती है और लोगों को हम नचाते भी बहुत है तो नाचते भी हैं, नचाते भी हैं, लेकिन डांस को एक एक तरह से एक साधना है, एक तरह से एक पूजा है, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू pursue this difficult field, especially in this part of the world, and where we are talking about fusion dance, we're talking about Indian classical dance, and you do everything. So पहले तो ये बताओ कि शुरुआत कैसी, डांस की तरफ आप क्यों आकर्षित हुई? एक्चुअली डांस को मैंने नहीं चुना, डांस ने मुझे चुना. बिकॉज जब मैं छोटी थी, आई गेस आई हैड जस्ट स्टार्टेड वॉकिंग, तो जैसे घर पे कीर्तन वगैरह होते थे तो ऑल द लेडीज वुड गेट टुगेदर एंड सिंग भजन, एंड जब कृष्णा राधा के भजन होते हैं आई वुड गेट अप एंड स्टार्ट डांसिंग. तो लाइक इट वाज जस्ट लाइक natural. तो my parents say कि as soon as she started walking she started dancing. तो डांस आई थिंक मेरे रगों में ऐसे पहले से दौड़ रहा था, पता नहीं कहाँ से, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई डांस करता. बट एक और थ्योरी है कि जब मैं 1.5 years की होंगी, जब हम आपके कौन आई थी माधुरी दीक्षित की, एंड मॉम हैड टेकन मी फॉर द फर्स्ट टाइम टू मूवी थिएटर, एंड मैं पूरा टाइम डांस कर रही हूँ माधुरी दीक्षित को देख के, एंड शी इज द बिगेस्ट इंस्पिरेशन आई हैव हैड इन माय लाइफ. So I actually never got formal training because मेरी मम्मा कहते तुझे डांस पहले से ही आता था, so we just let you be. तो मैं घर आके I remember I would dance for like 8-9 hours. I would just keep dancing. तो स्कूल में जो annual functions होते थे, ये होता था, वो होता था. And then we moved here and I lost touch with dance. Because as an immigrant child, you get bullied, you get so many other challenges and obstacles in the way. Yeah. So I lost that confidence, and mom would be like, like show me something, and I'll be like, no, mere se nahi ho raha. I was like 11, like I would start crying, and then talent shows वगैरह आए, so my family encouraged me कि जाओ participate करो, and then started getting more confidence. My friends and everyone started encouraging, so वहीं से journey, yeah. I never took it as a thing I would pursue professionally. That's one thing. It was always like a thing I knew how to do, and I was like, okay, ये चलता रहेगा बस, hobby, yeah. राइट. तो आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में किसी ने बोला नहीं, जैसे मोस्टली होता है कि हमारे फैमिलीज में दे मोस्टली टेक मेडिसिन, इंजीनियरिंग टू बी द मेन स्ट्रीम करियर्स, तो जब आपने आर्ट्स और डांस को चूज किया तो किसी ने मतलब कमेंट्स नहीं पास किए या कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुई? तो हाउ डिड यू हैंडल दैट? So there was a lot of criticism when I first started my journey. Like they thought like I could have gone to like Harvard Law, or like like big aspirations for their daughter. Obviously, right. I'm the only daughter as well. तो बहुत pushback था कि academic career pick करो या कुछ ऐसा pick करो जिसमें there's because they've sacrificed so much of their lives to come here. Right. So there was a lot of pushback, but we got through it. There was a, I guess my mom was also standing by me as a pillar. So if we're talking about women of worth and right. of women, I would like to give it to my mom, like the credit to my mom, because she was like, "Nahin, like this is what she loves to do. We cannot take that away from her." And she stood by me through the whole thing. And I would like to say, like, if I'm sitting here today, it's my mom sitting here. It's not me. Wow. Yeah. 2023 में मुझे याद है 2014 में हमने अपनी एक फाउंडेशन शुरू करी थी, और उसका पहला प्रोग्राम था. तो इशिता उस समय डांस कर रही थी और स्टेज शोज कर रही थी, और ज्यादा यंग थी इससे, अभी तो और यंग लग रही है लेकिन वो पहले बड़ी यंग थी. तो लाइक शी परफॉर्म्ड ओवर देयर, और कोई स्टेज नहीं था, एक सिर्फ रूम था हम उसके अंदर कम्युनिटी हॉल में, एंड एवरीबडी वाज जस्ट लुकिंग एट हर द वे शी वाज डांसिंग, और एक बॉलीवुड सॉन्ग पे इसने डांस किया. उसके बाद कई और ऐसे शोज हमारे फाउंडेशन के आए जिसमें स्टेज पे परफॉर्म किया. फिर बाद में इसकी और टीम्स भी बनी, और इसके साथ जो लड़कियां थी वो जुड़ी और उन्होंने परफॉर्म किया. लाइक शी वाज अ काइंड ऑफ हाउसहोल्ड नेम फॉर एवरी फंक्शन हैपनिंग इन कैलगरी. यार यहाँ पर अगर हमने इंडियन डांस को पोर्ट्रे करना है तो किसको, कौन इशिता, the first name was Ishita, कि इसको बुलाओ. तो like she will represent our culture, our dance in the most
परफेक्ट वे। Yeah. एंड द वे शी सेज कि इसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने आप को डांसेस के जो मूव्स हैं उसको प्रैक्टिस करना, एंड शी सेज जितना जितना प्रैक्टिस करती रही है, बहुत बहुत हिम्मत चाहिए। और द वे शी सेज के क्रिटिसिज्म होता है, लोग थोड़ा सा कहते हैं कि यार क्या हम इंडियन डांस देख रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर एक अपने आप की पहचान बनाना एक बहुत बड़ी बात है। Thank you. And actually, मैं कहना चाहती हूँ कि a lot of my journey started with your organization. Like Calgary में मैं बहुत छोटी थी, and मैंने उससे पहले solos जैसे स्कूल वगैरह में किए होंगे. But Amrit ji actually used to do a lot of senior programming and a lot of very positive events in the community. And मैं वहाँ पे जाके solos करती थी, वहाँ से ही हिम्मत बढ़ती थी. And जो blessings वहाँ पे मिली हैं ना, I don't think I can ever replicate that. जो seniors ने मेरे सिर पे हाथ रखा है, and I like get emotional thinking about it, but मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई है. Oh, that's amazing. और अभी तो आपने थिएटर में भी लॉन्च किया है. I was there. I saw जीवन, and I think that was definitely a history in making in Calgary. मुझे नहीं लगता कि कैलगरी में अब से पहले ऐसा कुछ हुआ था. So what was the inspiration behind जीवन? एक मिनट, जीवन के बारे में बात करेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट. Yes. बिकॉज इट कैन बी डन इन जस्ट 2 वर्ड्स. मैं सॉरी आपकी बात को काट रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि कुछ जो अचीवमेंट्स इनकी हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ये सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर है सीबीसी न्यूज जो है, जो चैनल है कैनेडियन चैनल, उसमें तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, वेरी ऑनरेबल थिंग कि हमारी अपनी लड़की एक इस तरह की फील्ड में है, और एवरीबडी लुक फॉरवर्ड टू द वर्क शी डज. उसके बाद इनको जो अवार्ड्स मिले हैं उसमें है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन आर्ट्स एंड कल्चर एंटरटेनमेंट, साउथ एशियन इंस्पिरेशन अवार्ड मिला है, फिर इशिता को क्वीन एलिजाबेथ प्लेटिनम जुबली मेडल मिला है. ऐसे बहुत सारे मेडल्स हैं जो इनको मिले हैं, और अचीवमेंट्स के लिए इनको प्रेज किया गया है. तो मैं वापस आता हूँ आपके सवाल पे. तो जीवन इशिता एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उसको आपने जिस तरह से प्रोटेक्ट किया, और मुझे वो चीज अभी तक नहीं भूलती. आप एक प्रोग्राम में थी और आपने कहा था कि मेरे को कोई स्पॉन्सरशिप नहीं चाहिए, आप बस शो की टिकट्स लो और उसको देखने आओ, बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड दैट इज द बिगेस्ट कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट anybody can give, especially at a very early stage where people look for कि यार हमारे को कोई स्पॉन्सर कर दो ताकि मेरा खर्चा पूरा हो जाए, ये हो जाए. But you and your team went ahead and they were so confident that we will give you something which you will remember for a long time. Yeah. So back to सिमी जी, शुरुआत बताएं जीवन की. शुरुआत जब भी मैं मधुबन के बारे में सोचती थी, लाइक 2016 में मैंने शुरू किया है, एक इमेज जैसे दिमाग में चलती रहती थी, and I was obsessed with it, कि एक दिन हमने अपना खुद का शो करना है. तो मैंने जब मैं 14 थी, अगेन माधुरी दीक्षित आ गई, बट जब मैं 14 की थी, आजा नचले आई थी, रिलीज हुई थी, और उसमें उन्होंने प्ले किया था लैला मजनू का, एंड मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा लगा. उसके बाद मैं थिएटर में बहुत इंटरेस्टेड हो गई. सो आई वॉच अ लॉट ऑफ थिएटर, एक्चुअली वॉच थिएटर मोर देन आई वॉच मूवीज. जहाँ पे भी मैं रिसर्च कर सकती हूँ, अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रही हूँ, आई गो एंड वॉच कि वहाँ का लोकल थिएटर एंड म्यूजिक एंड आर्ट क्या है, सो वी कैन लाइक ब्रिंग इट बैक. सो लास्ट ईयर आई वाज इन स्पेन एंड आई सॉ लाइक जैसे flamenco होता है, there's music, live music, and then the dancer comes in. There's so much, like they go through their entire 9 emotions जैसे हमारा नवरास होता है. तो and I was just like, this is so cool, and like वो ना जैसे जुनून सा पैदा हो जाता है. एंड आई फाउंड पीपल हु आर एज क्रेजी एज मी इन मधुबन, तो उनको भी जैसे मैं क्रेजी आइडिया देती हूँ, कि ये करते हैं, तो वो बोले वो भी चाहिए होती है ना, टीम भी ऐसी चाहिए होती है जो आपकी जुनूनियत और आपके पागलपन को सपोर्ट करे. सो लाइक मुझे ना बलून दिख रहा है, और मुझे रेड बलून दिख रहा है, और एक लैडर दिख रही है, और मुझे उसके अराउंड एक कॉन्सेप्ट बनाना है. तो पता नहीं कहाँ से स्टोरी चली गई. और आई लाइक टू रियली कनेक्ट टू आवर वेदास, एंड आई लाइक टू कनेक्ट टू लाइक कि हमारा सभ्यता और कल्चर कैसे डाला जाए इसके अंदर. तो आई वाज एक हीरोज जर्नी होता है, कॉन्सेप्ट होता है थिएटर में. फ्रॉम हीरोज जर्नी इट वेंट टू स्टेजेस ऑफ लाइफ, व्हिच इज द 4 आश्रमास, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, sannyas. So took that concept and I was like, okay, this is how we're gonna portray all our strengths. हमारी टीम में इतनी strengths है. We have a beatboxer, we have a Bharatanatyam dancer, and then like it's like such an extreme. We have a classical singer, and then we have someone who can sing rock. Like how do we like portray all of that? तो हमने थीम बनाई. We were thinking सर्क दु सोलेil बनाया जाए बॉलीवुड के लिए, and जो कभी किसी ने यहाँ पे देखा नहीं है, and आर्ट को प्रिजर्व किया जाए इंस्टेड ऑफ लाइक जब हम किसी और शो में जाते हैं. आई लव ऑल द शोज दैट वी हैव इन आवर सिटी.
आर्टिस्ट का ना वो फ्रीडम चला जाता है. We go there, they tell us this is the theme, you have to do it in 5 minutes. But इसमें हमारा खुद का प्लेइंग ग्राउंड था, हम अपने होम ग्राउंड में थे. We could create something from our own hearts and we could portray that. So that was the biggest thing, that we felt creative freedom. Because even कई बार मैं जब 5 मिनट की performance कहीं और जाके करती हूँ, I sometimes feel tired or drained. But after dancing for 1 hour, I was like, दोबारा से करना है भाई. Like that was the energy we all felt. So Jeevan is basically a piece of everyone's heart in this team. Everyone got to highlight themselves. Mhm. They got to show their strengths, and we got to celebrate the one thing that's very common with all of us, which is life and the stages of life we go through. No, that's amazing. मैं बहुत ध्यान से आपकी बात सुन रहा था. उसमें एक चीज जो मुझे और अपील करती है कि हम लोग यहाँ आकर भी ना, आप जैसे बच्चे जो हैं वो हमारे कल्चर को नहीं भूल रहे. आपने जो 4 फेजेस ऑफ लाइफ बताए, लाइक आज मैं सड़क पे जाऊंगा तो शायद कोई नहीं बता पाएगा मेरे को, राइट. तो हमारा कल्चर, हमारा सभ्याचार इतना रिच है, उसको हम किस तरह से प्रिजर्व करके लोगों को प्रेजेंट करें, क्योंकि यहाँ पर आकर हम वो चीजें भूल जाते हैं. हमारी डे टू डे लाइफ जो है ना, उसके अंदर सिमी जी कहीं याद नहीं रहता. ठीक है ना, कि यार चलो संडे को गुरुद्वारे चले जाएंगे, मंदिर हो आएंगे. यू नो, पीपल आर सो बिजी इन देयर ओन लाइफ्स. लेकिन हमारी लाइफ किस तरह से, एक तरह से यू नो लिखा हुआ है कि ये हमारी लाइफ के फेजेस हैं, तो उसको याद दिलाना इट्स अ वेरी बिग थिंग. एंड ऑल कुडोस टू यू कि आपने इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट चुना, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ और भी हो सकता था. ठीक है, जैसे आपने कहा लैला मजनू की कहानी है, शेरी फरहाद है, आपने लव स्टोरी बता दी, लेकिन आपने अपने कल्चर की जो जर्नी है, एक इंसान, हर इंसान जो हमारे धर्म में पैदा हुआ है, उसको आपने दिखाया कि ये आपकी जिंदगी का. और इसका एक और रीजन भी था, क्योंकि बॉलीवुड का परसेप्शन वेस्टर्न वर्ल्ड में ये बन चुका है कि बस 2 लोग, लड़का लड़की एक ट्री के अराउंड नाच रहे हैं, एंड इट्स लाइक जस्ट दोस टिपिकल लव स्टोरीज. बट आवर आर्ट वर्क गोज वे बैक, एंड देयर इज सो मच यू नो रिचनेस इन आवर कल्चर. तो इसको कैसे दिखाया जाए, वेस्टर्न वर्ल्ड में कैसे दिखाया जाए, वो कॉन्ट्रास्ट कैसे बिल्ड किया जाए. That was also one of the main motives behind doing something unconventional. Oh, for sure. Yeah. No, and I think I witnessed that, like her reaction and the audience's reaction when Jeevan concluded. It was like her art consumed her, and the energy of the artist was definitely, like she said, there was no limit. It was boundless. The passion we could feel. Like I had goosebumps. Like literally, I had goosebumps. It's like, oh my God, this is so educating. This is so powerful, and even I didn't know about it. Like that in-depth knowledge of our Vedas, our culture. It was beautiful to see, but the way that amalgamation that you had, like Western culture, Punjabi beats, and you know, like the pure traditional Hindi with sitars, harmoniums. Oh my God, I was like, this is heaven, like heavenly musical abode. It was amazing. Ishita, I literally want to say, मैंने ऐसा कुछ जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया था. और मैं जब टिकट्स भी बाय कर रही थी तो आई वाज टेलिंग माय पार्टनर, इट्स लाइक आई डोंट थिंक सो आई एम गोना अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट जस्ट सिटिंग देयर, it was like the best thing I experienced. And I think the audiences gave a standing ovation. And when she came on the stage in the, I think, conclusion, she was crying, and I think everybody had tears in their eyes, because we were all like, oh my God, like nobody does this for our culture. And the passion, the energy, the hard work, but most of all, I think it was her commitment that I could see. Like it was something very like pure, in its very original form. Like, you know, it's yeah, it was just amazing. It was just for me, it was so riveting to watch that. And I think you should continue that great work. Usi time मैंने सोचा था कि, you know, Ishita should be there, because she is setting a very different platform for our community, for our women. Ishita, आपने बोला था कि आपकी मामा जो थे उनकी वजह से you are what you are, and I think that is the example we want to set through WOW, is if one woman stands up and supports another woman, see what can happen. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. लेकिन सबसे बड़ा एक आश्चर्यजनक बात यह है कि आज हम कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, वहाँ सबसे बड़ी दुश्मन औरत की औरत ही है. Exactly. सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है कि सास भी कभी बहू तो ठीक है, लेकिन वो सास सब दुश्मन क्यों है? तो पोर्ट्रे ऐसे करा जाता है कि स्टोरीज के अंदर, और हमारे
टीवी या सिनेमा में कि सबसे बड़ी औरत की दुश्मनी औरत है, जेलसी फैक्टर बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टोरी, स्टीरियोटाइप के ऐसी कुछ चीजें दिखाई जाती हैं, लेकिन इंटरनली अगर हम देखें तो जो माँ बेटी या सास बहू या बाकी कोई भी रिलेशनशिप है उसको बेस्ट होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सके। दुनिया में वैसे ही बहुत वुमेन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, Already तो है। ऑलरेडी और Already. क्रिएट करना इज समथिंग वी शुड अवॉइड। Avoid. And Ishita, I think what Simiji said, totally resonate with that. And I have seen you growing, like आपने अपने skills को, आपने अपने डांस को, अपने communication को, अपने जो एक मेरे होती है ना कि देखो बहुत सारे all भी dancing school हैं कैलगरी के अंदर, there are a lot of other people who are doing this kind of work, but again to be consistent and हार नहीं मानना एक बहुत important factor है. There was a time, don't mind it, I want to say it on our channel, that you were really down. Yeah. You had कि कैसे होगा, कब होगा ये, and you shared with me कि भैया कैसे करेंगे हम लोग, मैं I'm so dejected, पता नहीं लोग क्या करते हैं, क्यों बोलते रहते हैं, There's a lot of a lot of politics Lot of and politics. this and that, and now Yeah. look at you, like you have left everything down और तुमने छोड़ दिया, अब तुमने ये क्या किया ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन वो कैसे मूल किया? बनकर क्या था कि यार बाहर में जाओ, मतलब कि जैसे मेरा मूल बनता था कि यार तुम्हें ठीक है, तुम मैं समझ नहीं आ रहा ना, इट्स ओके, देन लीव मी, देन स्टे अवे, देन डोंट कम इनटू माय लाइफ। Yeah, तुम मेरे को नहीं समझ exactly. पा रहे, इट्स फाइन, मैंने तुमको दिखा दिया कि मैं ये हूँ। मैं ये हूँ। So मैं वो जानना चाहता हूँ, so that everybody else who looks The raw at today's, Ishita. our program today, our episode today, उनको भी लगे कि हाँ, जब एक भगवान ने तुमको बना के भेजा है, Exactly. और तुम्हें इतनी एनर्जी है, सब कुछ है, और तुम अच्छा कर रही हो, फिर भी लोग अगर तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद तुम उस लेवल पे पहुंची, तो मूल मंत्र क्या था? So when I first stepped into this industry properly, like as in not like a hobbyist, but like actually wanting to pursue it, so it was a man's world. तो बहुत male centric dance groups थे, and लड़कियों को accessories की तरह use किया जाता था, which I was against, because कई बारी ऐसा हो रहा था कि I was contributing maybe 5-6 hours into choreography, and जब नाम आता था तो like group वो like man का आता था, and it was not about the people who were working behind the scenes or who were helping. And then even if it's a female centric song, you still have a male lead, and it just like it felt like जैसे हमारा ना एक microcosmic world बन गया है, जो बॉलीवुड में हो रहा है वो हम यहाँ पे भी कर रहे हैं. And I just didn't like any of those concepts. I didn't like कि एक beauty contest बन गया था almost, where like अगर कोई dancer बहुत ज्यादा सुंदर है उसको lead बना दो, it's not about dance, skill, art, कुछ भी नहीं है. And I was like, what am I doing? And then this is like, it was sucking the soul out of me. So जब आप politics वाली बात करते थे, there was a lot of lashback when I first started Madhuban. There were a lot of attempts to shut it down, like externally, like बहुत लोगों ने बिठा के भी बहुत कुछ बोला है मेरे को. मम्मा साथ में थी, thankfully. Mama had always been with me. आपको याद होगा कि मम्मू used to come to Yeah, of course. when I was younger. Mom used to come to every performance she was every little thing. तो उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है, and there were a lot of flashbacks कि तुम क्या समझती हो, what do you think you are, like you're gonna do this dance, तुम्हें आता नहीं है, ये नहीं आता, वो नहीं आता. And I was like, okay, sounds good. And actually मैं नहीं आता था, like I didn't know how to choreograph, I didn't know how to lead a team. तो वो सीखा मैंने. मैं पहले मेरे को सिखाना नहीं आता था क्योंकि कभी सीखा नहीं. तो डांस को कैसे सिखाया जाए, ब्रेक डाउन किया जाए, नोटबुक्स लेके जाती थी, कोरियोग्राफी लिख के, तो फिर पढ़ के तरह सिखाती थी. यूजुअली जो नहीं करना चाहिए, आई वुड डू ऑल ऑफ दैट, टीच माई सेल्फ हाउ टू टीच. फिर कोरियोग्राफी करना सीखा. मैंने फिर सोचा कि अगर ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं हमारे अगेंस्ट है, तो मैं उसको कुछ नहीं कर सकती हूँ. आई कैन ओनली कंट्रोल माई रिएक्शन टू इट. So I learned how to control my reaction to the things that were coming at me, because a lot of negativity was coming at me. And bullying is something that I'm not foreign to. Because जब मैं छोटी थी, जब मैं यहाँ आई थी, तो I was bullied in school, I was bullied in university as well. I've shared that story before, where I was bullied for like a long time. And it's also because I feel like because I'm different, because I don't like to go with the herd mentality कि अगर ये यहाँ जा रहे हैं तो हम भेड़ियों की तरह उनके पीछे चले. भीड़ से अलग रहो. वही तो वो लोगों को कई बार नहीं अच्छा लगता. like कैसे ये, what does she think of, ये की बहुत बारी थीम आया है, what does she think of herself, why does she think she can be different than us, which is not what I'm trying to do. I'm just trying to be myself. Exactly. Right. So
coming back to that point, I was just trying to keep myself strong कि कोई नेगेटिव रिमार्क आता है, कोई रूमर्स स्प्रेड होते हैं, काफी रूमर्स ये स्प्रेड हुए थे कि मेरे पापा जाके बेग करते हैं ऑर्गेनाइजर्स को कि इशिता को डांस में ले लो या शो में ले लो. एंड इट वाज फनी बिकॉज आई न्यू माय डैड वाज लाइक नहीं बेटा स्टडी करो कुछ और करो. सो इट वाज जस्ट लाइक सच अ कॉन्ट्रास्ट कि घर पे भी आई वाज फाइटिंग अ बैटल एक्सटर्नली. तो now I have to say my dad is very supportive. But पहले उस टाइम पे बहुत tough period था, and then I found the right people. So I want to give a lot of credit to my team because the people, the girls that I met at that time, they understood what was happening around. But I also didn't want any of the drama to fall on them. तो मैं उनको बहुत अभी भी बहुत protect करके रखती हूँ. कई बार होता है अनबन होती है ऑर्गेनाइजर से, अनबन होती है या किसी से और अनबन होती है externally. My team doesn't get to hear about it. Because I think they should just come and they should focus on the art rather than ये जो politics मुझे झेलनी पड़ी थी. And but I do like to remind them कि they have it a little easier and they should be grateful कि ये platform अब बन चुका है, कि they're protected, nobody's gonna come at them, they're not gonna say things like आप तो नाचने वाली हैं या तो ये हैं वो वाली चीजें अब वो कभी भी मेरी लड़कियों को कभी हिट नहीं करेंगी, मेरे डांसर्स को कभी हिट नहीं करेंगी. So yeah, the journey I would say it was just containing my reactions, putting your head down, working on your work. लोगों को पसंद आता है. मेरा फेसबुक डिलीट हो गया था एक बारी, तो मेरा करवाया गया था फेसबुक डिलीट. रिपोर्टिंग करके. या रिपोर्टिंग करके. So I fought to get my Facebook back. तो उस टाइम पे फेसबुक से सारा आर्ट्स का बिजनेस चलता था. लोग आपको वीडियोस देखते थे, they will hire you for another work. मेरे पास किसी के नंबर्स भी नहीं थे, सारा कुछ फेसबुक पे होता था. तो उस टाइम में हमारे कोई gigs नहीं थी. It was 2019, I remember. We had no gigs lined up, and I felt disappointed as a leader because I was like, I have all these girls, and now I don't have any performances to take them to. So I was like, okay, वीडियो बनाते हैं. तो हमने एक वीडियो बनाई. वो उसका नाम था सॉन्ग का नाम था कन्या. So it's about women. And it was about how we all found each other. And I get goosebumps thinking about it because that video. We took 16 hours to make that day, and हम सारे रोते घर गए थे कि इतने थक गए थे. It was Alpha Photography who helped us with that video. Ishu Sharma, I don't know if you guys have met him yet, but he's phenomenal and he's more than a wedding videographer. He's a very big creative, and so he helped us with that video. हमने वो video release कर दी ऐसे ही YouTube वगैरह पे. मेरा Facebook अभी भी live नहीं था, and that video, and I didn't work for CBC at that time. It ended up on CBC News, and that launched us again. And then it was like universe, like कि उन्होंने हमारा एक मध्यम काटने की कोशिश की, कुछ और बन गया. और वो it made me realize how self-sufficient we are. हमें shows की भी जरूरत नहीं है. Artist को shows की जरूरत नहीं है. Artist को अपनी खुद की जरूरत है, and they need a way to channel that art. That's all. This is World of Beautiful. Women. This is wow. This is World of Women, and you can resonate this particular story right now with wow, because again, amazing way she explained everything. And what I can say over here, I'm speechless. I'm not getting any words right now because the way Ishita has brought herself and her team to this level makes her a very स्ट्रॉन्ग पर्सन. जो आज की दुनिया में इन्होंने बहुत सही बात की कि, और सिमी जी यू विल एग्री विद मी कि मेल सेंटर वर्ल्ड अभी भी मेल सेंटर वर्ल्ड है. और हम लोग देश बदल लेते हैं लेकिन मेंटालिटी नहीं बदलते. ठीक है ना. तो अपना जहन बदलने की जरूरत है, अपना दिमाग बदलने की जरूरत है, अपनी सोच बदलने की जरूरत है. देश बदलने से, भाषा बदलने से एक चीज नहीं होती. अपने आप को चेंज करें, अपने दिमाग को चेंज करें, अपनी जहन को चेंज करें, और जितना हो सके हमें इन बच्चियों का, अपनी माओं का, बहनों का साथ देना है, ताकि वो भी आज इशिता को, जो आज इशिता है और आगे और भगवान इसको और ऊपर लेके जाए, तो वहां तक वो पहुंच सकें. सिमी जी, what you will say about this her story? मैं भी कंक्लूडिंग यही कहना चाहती हूँ, जो इन्होंने बोला है कि नवरात्रि में सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा करने से कुछ नहीं होगा. जो आपके आसपास वुमेन है, जिनको आपकी जरूरत है, जिनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, प्लीज उनको सपोर्ट दीजिए.
पॉजिटिव सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे हमने इशिता की स्टोरी सुनी, और ऐसी बहुत स्टोरीज हम आपके पास लेके आएंगे। और इशिता 5 मिनट है हमारे पास, और कुछ साल पहले मेरी तुमसे बात हुई थी, और तुमने कहा था भैया बॉलीवुड जाएंगे। तो बॉलीवुड से शुरू हो गया, बॉलीवुड शुरू हो गया। तो अभी ये रिसेंटली खुफिया एक जो सीरीज है या फिल्म है वो आई है, तो वो कैसे हुआ वो बताओ, क्योंकि उसमें मधुबन का एक पार्ट है Oh, जो wow. दिखाया गया है, and that is Oh, I a didn't know very that. big thing for all Calgary people, and for our culture, and for especially for Madhuban and your team. Amazing, It's yeah. a very big thing, right? Yeah. And it's on Netflix, and it is going good, and people are loving it in my family. Like Oh, everybody wow. watched it, and they pointed out, hey, this is Ishita over there. Oh, wow. Olympic Plaza में आप स्टेज पे खड़ी पीछे डांस कर रही हैं। तो Bollywood is coming. It is start. It's So started. and I see you with the different directors, and coming over here and meeting you. So it's a start, and Wow. it's a very positive start. तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? G was also one more thing that universe has thrown our way. So I think we didn't talk about it, but like Madhuban has expanded into music as well. So in 2018 we formed a band. So we have a full South Asian band as well, and all led by youth artists. So when the casting came out for Khufia last year, so usme they were looking for musicians. Because Vishal sir is so extraordinary. He's an extraordinary filmmaker. जब जैसे होता है ना गिटार का भी सीन होता है, he wants an actual guitarist. He wants his actors to actually be playing it. ये नहीं कि वो unplugged है और वो ऐसे कुछ भी कर दिखाने को, which usually does happen. Yeah. So, but he's so particular. So he was actually casting for actual musicians to play in that scene, not models. तो जब हम गए वहाँ पे casting के लिए गए थे, I was not allowed in the meeting because I'm a manager. I'm not the artist that they're casting. So agents थे, the local agents थे, they took them in the room, and thankfully कोई AD आया बाहर, and then they were like आप भी आ जाएं, like lobby में बैठी हैं, आ जाएं अंदर आ जाएं. And I was like okay, sounds good. And then I went in, and Vishal sir he asked one by one कि आप कहाँ से हैं बेटा, क्या करते हैं, क्या बजाते हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट करते हैं, and all that. It was so lovely, like I couldn't believe such a big director being so humble and conversational. Wow. With like local artists. And then he looked at me, he's like आप क्या करती हैं, and I was like I'm the manager, I'm not a singer or a musician. And he was like oh okay, तो आपको क्या है, like what is this? I'm like, तो फिर मैंने उनको 2 लाइन में elevator pitch दिया कि this is Madhuban. He literally did this. He looked at me, and he smiled, and he's like, we will be in touch. And I was like, okay. And then I was like, okay. Then he said something खुस to his AD, right, assistant director, and he said, आप गा लेंगी? And I was like, नहीं. And he's like, acting कर लेंगी गाने की? And I'm like, हाँ जी. He's like, okay. Then he like kind of jumbled things up, and I think उन्होंने कोई model रखी थी पीछे पहले. So then they got me for that role. So I also got an opportunity with my artists to be in that role, and it happened so organically. And हमारा 2 दिन का shoot था उनकी पूरी टीम के साथ. More than like the film itself, like being on screen, हमें पता भी नहीं था कि हमारा scene cut हो जाएगा, कि रहेगा, कि इसलिए हम चुप थे, बिल्कुल चुप थे कि ढिंडोरा बजाएंगे अभी, फिर बाद में scene cut हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा. Right. So we were quiet. We were waiting for the movie to release. But what I learned on sets with such big artists, हमारे साथ राहुल रामजी सर थे from Indian Ocean Band, जो premier Indian band है, जो बहुत ही बड़ा like famous बन गया था उस time पे, and उन्होंने जो advice दी है, like I cannot measure up to that. वो जो experiences थे, watching Vishal sir eat after his entire crew ate. From like junior artists to like बहुत ही like जो costumes को ठीक pin कर रहे थे. Everyone ate before he ate, and he took it सबके tables पे जाके आपने खा लिया, आप ठीक हैं. That is what I aspire to be, because जितना मर्जी आप बड़े हो जाओ, you cannot forget your roots. Absolutely. You cannot forget the people you started with, and sometimes human ego comes in the way, but you have to remind yourself. These are the people who lifted you, and these are the people who will stay with you. And that is what I learned from that experience. Well, that's amazing. Yeah. Again,
इशिता आगे बढ़ रही है, मधुबन आगे बढ़ रहा है और हमारा कल्चर आगे बढ़ रहा है। एंड इशिता वॉक की तरफ से मैं यही कहना चाहूंगा कि इसको बरकरार रखें। डोंट डिविएट योरसेल्फ, डोंट डिविएट फॉर अदर पीपल टू चेंज योरसेल्फ। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि यार अच्छा चलो यहाँ पे ये मिल रहा है, वहां पे वो मिल रहा है, तो मैं अपनी अपनी जो मेरी लाइन है या मेरे अपना वे ऑफ थिंकिंग है उसको मैं तो चेंज कर लेती हूँ और चलो चार पैसे इधर से आ जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा। But I think if you will not deviate and be on your path, I am very sure you go more heights. And a lot of other people will be here to be with you and to, bring up our culture and the way you explained Jeevan. Mhm. I think that is, we look forward from you. Thank you so much. Thank you so much. So सिमी जी, प्रोग्राम को आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं, तो बिफोर वी फिनिश आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूंगी, इशिता से मैंने यही सीखा है, एंड आई थिंक वी शुड ऑल बिलीव इन स्टैंड बाय आवर आइडियल्स. एज वुमेन वी शुड सपोर्ट अदर वुमेन. डेफिनेटली दैट कैन गो अ लॉन्ग वे. और प्रोग्राम की कंक्लूजन एक्चुअली आई थिंक राइटफुली इशिता ही करे तो बेटर है. और मैं इशिता से सुनना चाहूंगी कि वो हमारी व्यूअर्स स्पेशली वुमेन के लिए, जैसे आपने अपनी जर्नी देखी, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? If you are someone who's pursuing something, या आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरे दिल से सपोर्ट करें और don't be scared of what the outcome is going to be. The journey is more beautiful. And वो journey से जो आप सीखते हैं, that is going to go a long way. The people you're going to meet, those people are going to be the ones who teach you a lot about life. It really doesn't matter कि आप end में कोई award जीतेंगे, trophy जीतेंगे, medal. They're just metal pieces. Like at the end of the day, जो आप सच्ची में जीत रहे हैं, it's the community and the people who are going to stand by you. So don't be scared of doing what you're doing, and जो भी आप करना चाहते हैं उसे दिल से करें, and universe will help you out. क्या बात है. तो आप सबको अगेन बहुत टीवी की तरफ से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो खुश रहें, मस्त रहें और अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है आप लोगों से. क्यों जी? बिल्कुल जी. हैप्पी नवरात्रि अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस. We need your love and support. And as a woman, I would always stand by supporting other women. That is always going to be our everlasting message, our passion and commitment to women, uplifting and empowering women. क्या बात है. Thank you and take care. Thank you, Ishita, for your time today. Thank you so much. Okay, take care.